आधा में 180। कितना लेना है सर? कितना रोड है? 180 फीट का रोड है ये। 180 करोड़। is long-term finance, and this can prove to be critical in a project as big as the Delhi-Mumbai Industrial Corridor. It's a clear problem in the making. The amount of money that the government wants in PPP, the 12th five-year plan says that we need $1 trillion of work, 50% on PPP. Right now that converts into mind-boggling number of 500 billion. Obviously, you do not have that sort of financing. Large amount of funding today is from the commercial banking system, and the commercial banking system has what is popularly known as an asset liability mismatch. To counter that, the various stakeholders, whether it's the government, whether it's the private sector, whether it's the financial markets, have all asked for long-term debt funds. As you know, the government is in the final stages of announcing almost a 50,000 crore India debt fund, and the announcements have already been made. So that's the first major step to creating 10 to 20 year money for infrastructure projects. The sheer size of the DMIC project is a challenge in itself. The project passes through 6 states with different political parties at the helm and different ideologies at work. And getting the cooperation of states is a critical factor for the success of the project. So, what is the situation like? There is a general desire among states to do infrastructure, to create new cities. There's a general desire amongst politicians, I think now, and there's a clear realization that you're going to win the next election when you deliver in terms of infrastructure. And the states have been very, very receptive. In fact, we've had a very, very positive response from all the 6 states. And Gujarat perhaps is the best example of this. Its Chief Minister Narendra Modi's insistence on development has borne rich political dividends and has inspired a lot of states to follow suit. When we come back, we'll take a trip to the state and look at one of the biggest cities of the GMIC project coming up. Braj Binani Group and Bloomberg UTV present Building India. Braj Binani Group and Bloomberg UTV present Building India. As the first rays of sun break through the dark night, it is time for the sleepy little village of Dholera to wake up. Located गुजरात में पहला दूर तो तक दिख ही नहीं रहा है। क्या दुनिया आगे बढ़ने वाली, सोचो काम कितना बड़ा हो रहा है अंदर अंदर। समुद्र का पानी नहीं, ये पानी बारिश का भरा हुआ है, क्योंकि जो खारा पानी रहता है ना, ये पानी भरा रहेगा तो मीठा पानी की आवश्यकता है। देखो ये रोड यहाँ से वहाँ तक, ये पूरा एयरपोर्ट तक ये रोड जाने वाला है।
ये यहाँ से लेके वहाँ तक हाँ बहुत पूरा अंदर अंदर ही पूरा पूरा जाने वाला है। 180 फीट 10 18 में 180 कितना लेन है सर? कितना रोड है? 180 फीट का रोड है ये। ना के गटर लाइन बनाते हैं, ठीक है, उसमें डाल लगाया जाता है। हाँ, और 10 फीट आरसीसी नीचे करके उसके ऊपर ये लगाते हैं, उसके बाद उसके ऊपर आरसीसी रोड बनता है। यार पूरा रेडीमेड करके लगा देते हैं, रेडीमेड बनाते हैं ये लोग, मैन्युफैक्चरिंग है इधर। ले जाकर सीधा बैठा देंगे। हाँ, सीधा बिठा देंगे। बाप रे, अब देखो 97 में डाल दे रहे हैं। हाँ 7 में डाल देंगे। इसके अंदर यहाँ पे एक भी खंबा आपको दिखाई नहीं देगा, सारे के सारे वायर, सब टेलीफोन अंडरग्राउंड वायर, रहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वायर, सारे चीज सब अंडरग्राउंड रहेगी। और जिस जगह पे प्रॉब्लम होगा ना, वो कंप्यूटर के माध्यम से उनको दिखाई देगा। ऐसी सिस्टम बिठा रहे हैं यहाँ पे कि ये गटर लाइन पे यहाँ पे प्रॉब्लम है। सैटेलाइट। हाँ, तो उस हिसाब से यही ढक्कन खोलने का और यहीं से काम पटवा लेने का। देखो ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग, 6000 वर्कर काम कर रहे हैं इनके अंदर।